सो वेलकम गाइस विद न्यू वीडियो। तो आज हम एक नए टॉपिक पे नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का नाम है बेसिकली एरे लिस्ट। जैसे कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिसाइड किया था डिस्कस किया था कि एरे लिस्ट के एक दो क्वेश्चन आ गए थे एंड द क्वेश्चन वो लाइक हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। तो आज बेसिकली हम बताएंगे कि कहते कैसे एरे लिस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लास भी बहुत बेसिक होगी ताकि इन फ्यूचर में जब भी हम डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस टाइम पे हमें हेल्प मिले, क्योंकि हमें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता होगा। ओके, सो जब भी हमें कोई एरे लिस्ट को डिफाइन करना पड़ता है, ओके, तो उस केस में हाउ वी डिफाइन इट, दे डिफाइन इट लाइक दिस: array list एंड वी हैव टू गिव कि उसका टाइप क्या है, इंटीजर है क्या है, इंटीजर। देन एरे लिस्ट का नाम इक्वल टू न्यू न्यू array list of type integer and then we have to give like this। तो इस तरह एक कोई भी array list डिफाइन होती है। ओके, इस पे हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि हो गया ऐड, कुछ भी ऐड करना हो तो array डॉट ऐड हो जाएगा। एग्जांपल ऐसे array डॉट ऐड, कोई भी एलिमेंट ऐड करना हो उस लिस्ट के अंदर। ये लिस्ट जो होती है डायनेमिक होती है, स्टैटिक नहीं होती। जैसे एरे होती है उसमें स्टैटिक होता है वो कि 4 5 सिर्फ स्टैटिक वैल्यू डालती है, आपको पता हो तो लेंथ के टाइम पे। लेकिन इसमें ये डायनेमिक होती है। एक बार डिफाइन करने के बाद इसमें आप कितने भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, 5 6 7 8 9 10, इट्स अप टू यू। ओके, इसमें अगर आपको कुछ चीज़ फेच करनी हो तो डॉट गेट से होता है। डॉट ऐड में आपको 5 7 नंबर डाल दिया आपने, कोई वैल्यू ऐड कर दी। गेट में आपको क्या करना पड़ता है, गेट डॉट गेट और उसका इंडेक्स। इसमें भी इंडेक्स 0 से लेके n-1 तक होते हैं। ओके, अगर एग्जांपल कोई एरे लिस्ट है, इसका साइज 7 है, तो उसका इसका मतलब कि उसका जो इंडेक्स होगा, आपको आइटरेट करना हो, कोई गेट करना हो, तो 0 से लेके n-1 एलिमेंट तक फेच कर सकते हो। अगर आपको कुछ सेट करनी हो वैल्यू, ओके, एग्जिस्टिंग वैल्यू सेट करनी हो, जैसे एग्जांपल आपको 7th पॉइंटर पे कुछ सेट करना हो, तो 7 कॉमा मतलब एरे डॉट सेट, एग्जांपल ऐसे एरे डॉट सेट हम करेंगे 1,5 6, मतलब कि फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जो 0 फर्स्ट मतलब सेकंड जो इंडेक्स है बेसिकली उस पर 6 वैल्यू सेट हो जाएगी। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यू विल गेट टू नो हाउ टू डू इट फर्दर। ओके, सो बेसिकली यू आर गिवन एन इंटीजर टी। ओके, ये टेस्ट केस है मतलब, एंड यू आर गिवन एन एरे ए and you have and given integer b of test case. You have to tell whether b is present in array a or not. So basically okay, इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें इसको। जावा 8 हो गया, एरे सपोर्ट लेकिन पर जैसे सेकंड में चेक करता हूँ इसको एरे से सॉल्व करना है फिर किससे करना है। ओके ठीक है, हम इसको एरे से ही करना पड़ेगा। ओके फाइन, ये अभी एरे का ही है, कोई बात नहीं, इसको हम अभी एरे से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो एरे लिस्ट का होगा। ओके, बेसिकली एरे लिस्ट की जगह एरे आ गया, लेकिन फाइन, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। फाइन, चलो आ जाओ। तो इसका मतलब ये है कि अगर एग्जांपल इनपुट 1 है, ओके, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एरे रखा है। ओके, पहले हम क्या करते हैं, इनपुट के लिए लेते हैं। ओके, सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू ए डॉट आई प्लस प्लस। तो इसका मतलब जो भी हमें कोड लिखना है वो इसके बीच में लिखना है। ओके, अब क्या है कि मतलब वैल्यू दे रखी है 1। ओके, तो 1 दे रखी है, आई इक्वल टू 1 से। ओके, तो इसका मतलब 1 बार चलेगा। अब एरे का साइज़ क्या होगा, 5 दे रखा है, 5 हमें लेना पड़ेगा इसका।
स्कैनर स्कैनर है मेरे पास ऑलरेडी। इनपुट साइज इंट साइज इक्वल टू ए डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब आ गया साइज। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एरे क्रिएट करना पड़ेगा। एरे क्रिएट कैसे करते थे हम, इफ यू रिमेंबर, इंट एरे नाम है उसका इक्वल टू न्यू इंट और उसका साइज करेक्ट। साइज क्या दे रखा है, साइज क्या होगा उसका, साइज होगा बेसिकली साइज। ओके, अब क्या करना है ओके, तो अब साइज है आ गया हमारे पास, तो हम इसको पहले फिल करेंगे। कैसे फिल करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आई डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, और अब इसको पहली वैल्यू करेंगे, तो इंट p इज इक्वल टू न्यू इंट p इक्वल टू a नॉट a, यहाँ भी एस सी होगा, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो ये बी हो गया। अब ये बी आ गया हमारे पास, अब इसको हम ऐड करते रहेंगे। एरे ऑफ आई इज इक्वल टू, तो यहाँ तक हमारे पास अब ये हो गया कि ये हमारा एरे पूरा फिल हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें चेक करना है। ओके, चेक कैसे करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, not n, we have to give I dot length, not I dot length, we have to give array dot length. Same way we have to give here array dot length. Okay, and then what we will do is, once I will, then if 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 I, if array of I is equal to, क्या ये होने के बाद हमें फिर क्या करना है, हमें नंबर चाहिए, राइट। ये होने के बाद हमें नंबर चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, एक और नंबर लेंगे। वो नंबर कैसे लेंगे, int c, if I equal to c, then that time return system dot out dot print 1। ओके, और अगर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ओके, ओके, अगर पूरा फॉर लूप चला, और व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं, इंट काउंट टू 0। ओके, देन इफ दिस, देन काउंट इक्वल टू 1। ओके, अगर नहीं हुआ कोई बात ही नहीं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट काउंट। लेट्स सी, scanner, let's make it SC. Then variable I is already defined. Okay, in I loop already variable is defined, so what I will do is I will do it as j and j plus plus. Okay, fine. We will define it as print ln. Okay, in next line it should be given next line.
Fine, it is working fine. Great. So let's go to the next question. Okay, let me reset it. Okay. Okay, so here we already have a array. Okay, so we have to write a program that returns the list of elements that are present in the given list. Okay, which are divisible by 7. Okay, I think we have to solve it by array support. Yeah. Okay, fine. We have to solve it by array support. What happened? Reset. Okay, fine. So we have a list. Okay, now, so we have to find we have to return the list of elements which are present and divide by 7. So it is simple. For int I is equal to 0, I less than uh, a dot size. There was a dot length. Okay, for array. For it is a dot size, and it's a method I plus plus. Okay, now if if a dot get, basically I index we have to give, right, is modulus 5. We have to check that it is divided by 5 or 10. Modulus 5 is equal to 0. Okay, or, and it is, and both conditions should match. Okay, and a dot get I modulus 7 is equal to 0. That time we have to, what we have to do, we will create a one more list. Okay, one more list. So how to create array list integer array equal to new array list integer. Okay, and we will directly add array dot add, what we have to add, we have to add a dot get, and then once it is done, everything is done, then we will just return array. Let's see. Let me do it. Yeah, it is working fine. So we are just adding it by getting it. Okay, now moving to the next question. Okay, fine. Okay, let's do it. Let me reset it. So you are given an integer. Okay, integer array of length, integer array of given a of big int. Okay, arrays of big int. You have to find the and return the frequency of number b in an array. Okay, an array list basically. For example, if the input is arrays like 1 1 2 2 4, so 2 times 2 is coming, so output will be 2. Okay, so what you have to do is int count is equal to 0. Initially we will take count as 0. Okay, now we will iterate the list. Int I equal to 0, I less than a dot size, I plus plus. So if a dot get I is equal to b, okay, that time count plus plus, and in the end we will just return count. Return. Let's see. Yeah, it is working fine. Let's move to next question. Okay,
So now what we do, we have given an array list. Okay, we have uh, we have to check that it is sorted in non-decreasing order or not. Non-decreasing order means uh, if it is like non-descending. Non-descending order means ascending order. Okay, if it is in ascending order, that time we have to print as 1, and else we have to print it as 0. So for this, what we can do is, for int I equal to 0, I less than a dot size I plus plus. So okay, so now just a second, just a second, I come. Okay, so now we will check if अगर छोटा नंबर जो है, पहला नंबर, वो हमेशा पहला वाला नंबर आगे वाले नंबर से छोटा ही होना चाहिए. अगर कोई भी कंडीशन फेल होती है तो उस केस में हम आउटपुट रिटर्न कर देंगे 0. फॉर एग्जांपल, if array if sorry a dot get I is more than a dot get I plus 1. ओके, तो इस केस में क्या होगा, डायरेक्टली रिटर्न 0 एंड लूप विल बी गो टिल माइनस. ओके, ठीक है, रिटर्न 0 कर देंगे, रिटर्न 1. Yes, okay, fine. Next question. Okay, we have given an array list, okay, of integers a. Every element in it is repeated twice, okay, expected except one. So find that unique element. Okay, फाइन. एक नंबर है जो कि दो बार नहीं है लिस्ट में, उसको प्रिंट करना है. तो क्या कर सकते हैं इसको करने के लिए, सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं. ओके, दो बार फॉलो करते हैं इसको, हैश मैप के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अभी वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी हम करते हैं इसको नॉर्मल दो फॉर लूप में. इफ इन आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट साइज I plus plus. Okay, for int j equal to 0, okay, j is less than j dot size, not j dot size, j plus plus, it will be a dot size, or it will be just exactly j is less than I. I is equal to, for example, there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 elements, so we can say 9 elements. First element will be I of 0. Okay, I of 0. Then it will go to a is less than equal to 1. One time it will execute. One time, everything. Okay, now we will check if every element, if a dot j is equal to so a of j 0, it will never compare the first one, right? So 0 will be checking till 1,
will be basically checking if till I plus 1 till I plus 1 till a dot size minus 1. Okay, if a dot equal to, what can we do? It will compare error. First it will check. One will check till, okay, or what we can do is best idea. J will also go till 0 till a dot size. Okay, okay, now comes 1 will come. Yes, it is 1. Okay, okay, and what we'll do if a is j is equal to a of I. Okay, this is not like this. A dot get j is equal to a dot get I, then count plus plus. Okay, count plus plus count 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 equal to 0. Okay, count plus plus, and in the end, if count is equal to 1, return, what will return? Return a dot get fine. Let's see. Return else return c. Index out of 1. So basically, if I let's see, if I is 0, it will go till a dot size till here 0. Now comes to the next j. J will compare it with okay, then it will compare with 4, then 5, 6, 6, 7, then 1 plus plus. If somehow it matches it, okay. How it is out of 1? Let me think of it. Let me think over here. If let's see. Hmm, okay. No. Okay. Let's see. So int I is this made of size. Okay, less than, it should be less than, right?
Now next is new dot get change. Okay, let's see. Equal 0 and equal x dot equals dot equals fine. So basically, if you are comparing the two elements of an array, okay, that time you have to use equals, okay, not the uh, basically number. This is fine. Now goes to if you're comparing two elements, okay, of an array list, that time you have to use equals, okay. It because a dot get, when you're using equal to method, that time it is comparing the reference, okay, not the value. That why I use equals. Okay, guys. So next, let's go to next set of questions, okay. Let me go there. Okay, we are back. Let's go. Okay, so let me can move it to array list. It is array list. Okay, we have to solve it to array list. Array only. Okay. We have to write a program that returns the product of all elements present in the array. So yeah, it is simple. I think we all have done it. For okay, this is array list only. For int I equal to 0, I less than array dot size I plus plus. Okay, for do fit. Okay, then we have to do what we have to do is we have to give array. We have to take a variable. Okay, first int prod is equal to 0. Prod means product. Okay, or equal to 1. Okay, and then it will be what will be having it product of all elements present. Okay, product of all elements. So means for example, what it means that if this array has a 7 9 2 5 51, then it will be having the product of all 7 into 9 into 2. So fine is 1 is fine. So now we will do is prod is equal to array prod into array of array dot get, this is array list, right? I, and it will be of long type, and then we have to just return prod. Let's see. Yes, it is working fine. Okay, so let's go to the next question. This is also a list question. Okay, now what we will do is, so you are given an integer array list A and integer B. You have to required to you are required to return the count of pairs having sum equal to B. Okay, count of pairs sum equal to B. It could be like okay, count of pairs. Okay, fine. So example, if the array is 1 2 3 2 1, okay, then the count of 2 plus 3 could be 5 and 3 plus 2 could be 5. So that means the output will be 2. So it will be same like we did earlier. Now for int I equal to 0, I less than a dot size I plus plus. Okay, then for int j equal to 0, j is less than
a dot size j plus plus. Okay, now if if uh, okay, two pairs, and it will be, I think what I feel is it will be always uh, no, it is fine, I think j if it will be always the value of I. Okay, I till next number. Okay, so if and if uh, basically last element, if it is last element, then that time it will not be working, right? Sorry, it will be this one. Okay, till last element it will go, right? Second last element, and this will go till last element, and this will go till last element. Okay, so basically if a of I, a dot get I plus a dot get j is okay. So we are is I think equal to b. That time return we have to count, right? We have calculated the count, how many numbers we have. And count equal to 0. Okay, it will be count plus plus, and then the end we will be just returning the count. Okay, let's see. So int I equal to 0, we have to close it. Okay, then for int I equal to 0, I less than size a minus 1, size a size minus 1. Okay, I plus plus for j equal to I. Why I put a j equal to I? Because uh, it will be not checking its, no, we can 0 is fine. I think it will always be checking from the element where it is. Okay, or I will say I plus 1 will check, right? I plus 1 will check, and it will go till the end number, because we have to check from the next number, right? Not from the same number. Yeah, so it is working fine. Yes, क्योंकि ये देखो, एरे का पहला लूप चलाया हमने सेम जीरो से लेके एन माइनस वन तक. अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हम सेम वैल्यू को कंपेयर थोड़ी करेंगे आई को, हम उसके नेक्स्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले वाली वो तो ऑलरेडी हो चुकी होंगी. यस, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इसका भी तो कुछ ऑप्शंस. ओके ब्रो, इससे करना पड़ेगा. ओके, राइट अ फंक्शन टू चेक, write a function to check an array A has consecutive duplicate elements or not. Okay, so उस consecutive जो numbers हैं वो duplicate है नहीं. Okay, for int I equal to 0, I less than array dot length I plus plus. Okay, so ये भी same वही है. int j equal to 0, j I plus 1, j less than array dot length j plus plus. Okay, and it will be till minus 1. तो अगर if
If uh, basically if array of I is equal to array of j, then return true, और else क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न false. सेम लास्ट क्वेश्चन, बस में हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में. ओके फोल्डर बनाते हैं. ओके रिटर्न. Yes, fine, it's working. No, it is not working for one of the scenario. For example, this again. What is what is saying? The input will be 4. Oh, okay. So I'm going to copy this. This is refresh it. Okay. Int. No. Okay. Okay. First you have to fill the scanner. Let's see. Scanner. System dot in. Okay. Int a is equal to sc dot next int. Okay. For int I equal to 0, I less than dot length I plus plus array of I is equal to array is equal to equal to sc dot next int. Okay, this is how we will be filling it. Huh? Now let me check. We do it like okay. Okay, is equal to I plus 1. Yeah, fine. Why we are going with two loops? Yes, right. Fine, right? We can do it like this, right? We don't need to get two for loops. Single for loop will also work. Right. Yes. Single for loop will work. Yes. Because we have an array. Same. Okay, so here in this question, uh, what we solved earlier, for this also, uh, we were having a method, right? UV. So what could we have done is if we to find the enter. Okay, if we have done it like this, control C,
let me comment this thing. Okay, and here I will give j is equal to 0 minus 1 plus plus if j j plus 1 literally what will happen. Zero array list. In array list we are iterating till 0 to if a dot get j, first element we are checking, and then we are getting the second element. If count of two elements is equal to 2, okay, that time we are printing count plus plus. So in this scenario, for example, if we have 1 2 3 2, okay, 0 is that's fine, that's fine, it does run correctly. Okay, let me check this earlier what we go. Yes, fine, it's fine. In the correct. Okay, let's go to the next question. Okay, guys. So now you are provided with the integer array, okay, and we have to return another array of size uh, same as a, okay, such that b of I is equal to a of I into 3. Okay, that's simple question. So what we have to do is we have to return array list, same duplicate array list, but the elements will be, मतलब कि एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि पहले बना देता हूँ एक लिस्ट, ओके, integer array to new array list integers, ओके. तो एग्जांपल अगर एरे ए है, जो ए इंटीजर है उसकी है 2 2 2 2, 4 बाय 2 है, उसमें 4 एलिमेंट्स है 2 2 2, तो आउटपुट जो होगा वो होगा 2 इंटू 2 कितना, 2 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 8 8, समझे. आई की पावर क्यूब जो होगा वो होगा उसमें. तो इसमें सिंपल है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट साइज आई प्लस प्लस. अब हमें फिल करना है कौन सा, एरे डॉट ऐड. क्या कैसे करना है, एरे डॉट ऐड, पहले तो हम सब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लॉन्ग बी, सॉरी, हाँ, लॉन्ग बी इज इक्वल टू स्टार्टिंग में 1, ओके, यस, लॉन्ग बी इज इक्वल टू कर सकते हैं, हाँ, लॉन्ग बी इज इक्वल टू, हर बार ऐड करेंगे ना, लॉन्ग बी इज इक्वल टू ए डॉट गेट आई. अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके, हर बार, और फिर इनको पी ऐड, ओके, एंड देन इन द एंड वी विल जस्ट रिटर्न ऐड. तो ये करना है डॉट ऐड बी, और ओके, ये हमारी लॉन्ग टाइप की होगी, ओके. It is not working. Why it's not working? What is this? Returning. Okay, what you can do is, okay, is equal to 1, and then is equal to this. No, it is not giving it. Why it is not giving it? Okay. 3 times
right? Okay, it is not like three times you have to it. We have to do it three times, right? Okay. What it is suggesting us, don't multiply it right away. For int I equal to 1, I less than equal to 2, I plus plus. Cube we have to do, right? We have to put cube 3. So it is saying that don't do like this, do like this. Okay, and then just follow this for this, return this for int I, and we can take it as int I j. 0 j plus plus. It will be like this. Let me think. For j is less than equal to j plus p dot j. Right, j will be j. Fine, it is working fine. So last question of today. Okay. Mm, okay. You are given integer a. Okay, integer list, basically array of list, integer list a. Okay, you have to return integer list, basically of same size whose ith element is the frequency count of a of I. For example, mm, basically let me think, whose ith element is the frequency count of a of I. When comparing two elements of this, make sure use dot equals. Okay, explanation. Let me. So basically, if the given array we have 1 3 times, 2 2 1 times, and 5 2 times. So 3 1 times, 2 3 times, 2 3 times, and okay, and 3 is 1 time. For example, for this input, I'm showing you this is the input. Okay, for this the output will be uh, we have 1 3 times, we have 1 3 times, 2 1 time, okay, and 5 2 times. And get it. How to solve it? You are given an integer a. Okay, you have to return an integer array of same size whose ith element is frequency count of array I. Okay, got it. So basically what it means is, so now one, how many times one is, so it is three times. Two, how many times it is, only one time. Five, how many times it is, two times. One, three times. Five, two times. One, three times.
So this is what they want. Okay, let's see. For let me create the array list integer array equal to new array list integer. Okay, so first we will iterate it. For int I equal to 0, I less than a dot a dot uh, a dot size I plus plus. Okay, it will go to here, go to here. Okay, now for int j is equal to 0, j less than a dot size j plus plus. Okay, count plus plus, and count will be every time it will be refreshing, right? Count int count equal to 0. Okay, count plus plus, and after every we have to, what we will do is we will get it. So we will do is array dot set, right? Set or add, you can just add dot add count. Okay, return array. I think this will work. Array, we can't find it. Return array, right? We have to return an array. It is saying that we are not able to find, cannot find return array. Public integer. Okay, return array. Let's see. Okay, count is okay. How it is coming? For one, listening. Okay, sorry. If int j, sorry, if a dot get I dot equals a dot get j, that time we will add, right? That time we will count this plus, not every time. Yeah, it is working fine. So great, guys. So if if you're solving this question with me and we have solved 10 questions, so it is fine enough for basic array list. Okay, then we can go with the DSA. Okay, so आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आपको ये करने चाहिए खुद से भी एक बार. सो अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व कर दिया खुद से, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर फर्दर क्लासेस. ओके, सो जो हमारी फर्दर क्लासेस होंगी वो होंगी अब नेक्स्ट क्लास होगी 2D एरे पे. ओके, एंड देन वी विल बी डूइंग द 2D एरे लिस्ट. तो प्लीज़ आप इसको एक बार सॉल्व कर लेना, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो. फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी कंटेंट के साथ. ओके, थैंक यू गाइस.